leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. हेलो माय क्यूटीज एंड ब्यूटीज, हाय अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे को क्रिएट करना है 10 ब्यूटीफुल मोनोक्रोमैटिक कह सकते हैं मेकअप लुक। ये पार्टी वेयर मेकअप लुक है जिसे आप पार्टी में, फंक्शन में, रिसेप्शन में जहाँ मन करे वेयर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत ही आसान है, 10 मिनट में हो जाएगा आपके आई शेडोज का एप्लीकेशन। दिस इज दैट मच ईजी। एंड हाँ, अगर आपको ये लुक अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग ये ट्यूटोरियल पूरा देख के जाएँ और ढेर सारा देख के जाएँ। So without any further delay, let's get started. सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे प्राइमर एंड मैं यूज़ करेंगी यहाँ पर NYB का प्राइमर। Next, moving on foundation, I'm going with this NYB का Dewy Drops foundation in the shade Latte. It gives almost no coverage. It just makes your skin flawless, very dewy at the same time. It's very nice. मुझे ऐसा ही बहुत अच्छा लगता है। फुल कवरेज फाउंडेशन होते हैं वो एंड नॉट माय टाइप। हम लोग कर लेते हैं कंसीलर एंड कंसीलर के लिए आई एम गोइंग विद मेबेलिन फिट मी कंसीलर इन द शेड सैंड। इट्स रियली क्रीमी कंसीलर, बहुत अच्छा लगता है ये मुझे एंड इसको नहीं लगता है, ऑफ कोर्स आपको भी लगता है। अब थोड़ा सा हाईलाइटेड पॉइंट्स को बेस को सेट कर लेंगे विद NYB का लूज पाउडर। So let's bring some chisel to our face with this new Mars Varanasi face palette। मुझे ये अभी रिसीव हुआ है and I literally want to try it. Good. Contour passed out. Now it's blush time, so I love coral blush. That's why I'm going with this. Blush भी ठीक है। मैं अपना बेस सेट करूँगी with this NYB के Dewy finish setting spray से। I love this bottle, this is so good and I love some fragrance. So जल्दी से इसके ऊपर हाइलाइटर अप्लाई कर लेती हूँ। पहले अप्लाई करना चाहिए था, देखते तो आखिर कैसा लगता है। शैम्पेन कलर, चेक दिस आउट। भाई मुझे धीरे धीरे बिल्डअप करना चाहिए बिकॉज एक साथ में मैंने बहुत ज़्यादा इसमें लगा लिया है। इसने अपना एग्जाम पास कर लिया एंड दिस पास आउट विद फ्लाइंग कलर्स। Okay, let's move on the eye makeup now. This is a dupe of nude eyeshadow palette by Beauty। तो स्टार्ट करेंगे टेडी से। I love these brushes, they're so good। ये मीशो के ब्रश हैं एंड आपको भी चाहिए या फिर इसका फुल रिव्यू देखना है तो इसको मैं लिंक में डाल दूँगी एंड इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थोड़ा सा और प्रिसाइज चाहिए तो छोटा वाला भी ब्रश है इस किट में, सो उसी से ये वाला लेके तो सिर्फ अपनी क्रीज के अंदर अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। थोड़ा और प्रिसीजन के लिए ये जो किंकी शेड है अप्लाई करेंगे लिड्स पे। ये है एक शिमर शेड। थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए ये शेड यूज़ करेंगे विच इज़ टीज आउटर कॉर्नर में। मुझे पहले अपनी आइज़ करनी चाहिए थी बट आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर फेस पैलेट इसलिए मैं कूद पड़ी सीधा पर्टिकुलर शेड। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कलर। ये तो मेरे साथ धोखा हो गया यार, इसमें सिर्फ एकदम पतली सी लेयर की थी ग्लिटर की एंड उसके बाद अंदर पता नहीं क्या भरा हुआ जेली टाइप का। That's cheating. Good part. You did wrong again with me. And इसमें कोई भी लाइट शेड नहीं है तो I will jump to my this particular palette. Highlighter को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर वाटर लाइन में लगाएंगे ब्लैक काजल। इसको मैं ब्रश से कितना प्रिसाइज लग रहा है ना। मैं आइज के लिए यूज करी हूँ व्हाइट काजल। Okay, so it's time for eyelashes and
forget to comment in the comment section. ढेर सारा आप लोग अपना प्यार भर भर के जाओ एंड yep. और अगर आपको ये वीडियो और ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट forget to like this video and subscribe to my channel. That would mean a lot and thank you so much for watching. तो सब्सक्राइब करने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर मेरी फ़ोटो पर एंड कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन ऑन कर लीजिएगा. आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कुछ और मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड यहाँ पर है हमारा ज्वेलरी